Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 4. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social studies class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, citizenship, and today we will start its third lecture. So my dear students, let's quickly look at this objectives that we will cover in today's lesson. Differentiate between rights and responsibilities. So by the end of this lesson, all the students will be able to differentiate between what are rights and what are responsibilities. And the skills that the students will develop are comparison, analysis, and evaluation. So my dear students, let's quickly refresh our knowledge before we will move on towards the main lesson. So you have to answer a few questions. What is the difference between rights and responsibilities? In the previous classes, you have already studied about some rights and responsibilities. In the previous lecture number 2, we have discussed about your fundamental human rights. So you have to tell me about what is the difference between rights and responsibilities. Rights are your basic needs, which you must have, okay? And responsibilities are which you must perform. So, for example, your responsibility is to keep the environment clean, So these are the responsibilities, and rights are everyone must get clean water. So this is the right of everyone. So my dear students, what rights do you enjoy in the classroom? So when you are in the classroom, what are your rights? You get education, teacher will check your copy, and everyone must get a table and chair. Everyone must have a clear view of the whiteboard or blackboard or the smart board they are working on. So these are some basic classroom rules. Now, what are your responsibilities towards the class fellows and teachers? Keep the class clean so that everyone must have a clean environment. Do not make noise in the class. Keep your notebooks and copies clean, and these are your classroom rules. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Verily we have honored the children of Adam. यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इंसान को, या हम सब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो अल्लाह ताला ने हम सब को जो है वो इज़्ज़त दी है. Verily the most honored of you is in the sight of Allah is the most righteous of you. तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है, जिसका इखलाक है, जिसका बिहेवियर जो है वो सबसे अच्छा होगा. So my dear students, now on your screen you can see rights on one side and responsibilities on the other side. So let's quickly recap and refresh that what are rights and what are responsibilities. So rights are freedoms which we have that are protected by our laws. ठीक है, जो हमारा legal हक होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, that is our right. And what are our responsibilities? Responsibilities are the duties or things that we should do. ठीक है, जो हमने खुद perform करनी है चीज़ें, those are the duties or our responsibilities. So public transport is your right given by the government. ठीक है, आपको public transport जैसे कि buses है, train है, aeroplane है, these are the rights that you enjoy and which are given to you by the government. And responsibility, so my responsibility is to use it in a proper way. आपको इसको proper way में use करना चाहिए. Do not damage it, इसको ख़राब नहीं करना. Paying fare, और जो इसका भी किराया होता है आने जाने का fare, वो आपको ज़रूर देना है. And also keep it clean. So these are your responsibilities. If you have some rights, you also have some responsibilities. So my dear students, now quickly open page number 9 in your books. Pause the video and open the page. I hope everybody has opened page number 9 in their books. Now, my dear students, on this page, we will study about rights and responsibilities. So you have to put your fingers where I will read. It is essential to know that rights and responsibilities go side by side. You can enjoy your rights when you and your fellow people fulfill their obligations. Obligation means responsibilities and duties.
Below are the differences in rights and responsibilities. So my dear students, अगर हमारी कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ हकूक हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं. ये दोनों साइड बाय साइड जाती हैं, ठीक है. इफ यू हैव राइट्स देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. जो आपके राइट्स हैं वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों के राइट्स हैं. तो देखा आपने, ये सब साथ साथ चल रहा है. अगर आप अपने हकूक की आपको पहचान है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ख्याल होना चाहिए ताकि सक्सेसफुल और पीसफुल सोसाइटी चल सके. नाउ वी विल हैव अ लुक एट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज given on page number 9. So rights, according to law, a right is something which you are allowed to do morally and correct, just correct, ठीक है. A responsibility is something which you are bound morally to fulfill, ठीक है. राइट्स जो है वो आपको बाय लॉ मिलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी ड्यूटी है जिसको आपने पूरा करना है. एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, ठीक है. अब जैसे आपका राइट है कि आप अपना जो ख्याल आपके दिमाग में है उसको आप एक्सप्रेस करें. दिस इज़ योर राइट, कोई आपको उससे रोकेगा नहीं. नाउ व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? It is your responsibility, it is the responsibility of every citizen to give others freedom to share their ideas. अब अगर आप अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि दूसरों के आइडियाज़ को भी सुने और उनको शेयर करने दें. तो साइड बाय साइड हो गया ना. आपके राइट्स हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स. अब राइट्स जो हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? आपकी जो मुल्क है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है और वो उनका ख्याल भी रखती है कि सबको जो है वो इक्वल राइट्स मिल रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिलेटेड टू मोरालिटी एंड नॉट बाउंड बाय द स्टेट्स, ठीक है. अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के साथ बाउंड नहीं होती, वो आपको खुद ही फिल करनी होती है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है. The rights of a citizen include the availability of basic facilities like electricity, gas, clean drinking water, paved roads and better infrastructure. तो ये आपकी कुछ rights हैं जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. Every citizen is responsible not to damage the roads, harm the public places or misuse facilities like water, electricity and gas. अब अगर आपको ये सब आपके राइट्स हैं कि आपको गैस मिले, बिजली मिले, पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है. पानी का बेजा इस्तेमाल नहीं करना, पंखा जो है उसको चला हुआ नहीं छोड़ना, सिमिलरली रोड्स को ख़राब नहीं करना, अनटाइडी नहीं करना, गार्बेज थ्रो नहीं करना वहाँ, कीप देम क्लीन, कि उनको हार्मलेस रखिए. सो दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इट इज़ द राइट of individual to practice their religion freely, ठीक है. अब हम सबका ये राइट है कि हमारा जो भी मज़हब है, हमारा जो भी रिलीजन है, वी मस्ट प्रैक्टिस इट विद फ्रीडम, ठीक है. मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरा ये हक है कि मुझे कोई रोके ना नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से. इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसका भी ये हक है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करे. सो दीज आर द राइट्स. नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? No individual is allowed to stop any person from practicing their religion. अब अगर आपको आपका रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस करने की इजाज़त है, and that is your right, so your responsibility is not to stop others from practicing their religion. So that is how a peaceful and smooth society will move and form. Some other rights and responsibilities are given on page number 10. Every individual has the right to privacy. Privacy सबका हक है. It is the responsibility of everyone not to interrupt the personal lives of others or hurt their privacy. अब आपने दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है. We enjoy the right to live according to our culture freely. हमें अपने कल्चर के हिसाब से जो है वो रहने का हक होना चाहिए. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, we cannot force anyone to live the way we prefer. हमें अपने मुताबिक दूसरों को नहीं ढालना, हमें उनको उनके मुताबिक रहने का उनको मौका देना चाहिए. इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू गेट एजुकेशन. सबका हक है कि उसको तालीम मिले.
It is the responsibility of the government to provide free education. अब एक government की responsibility है कि वो सबको free education provide करे. It is the right to choose the representative of our country. अब वोट कास्ट करके ये हमारा राइट है कि हम अपनी मर्जी से जिसको वोट कास्ट करना चाहें अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सिलेक्ट करने के लिए, लाइक यू सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, सो दैट इज़ आवर राइट, सो दैट वी कैन सिलेक्ट एनीबडी, नोबडी कैन फोर्स इट कि आपने इसको सिलेक्ट करना है या उसको. इट इज़ आवर राइट टू सिलेक्ट एनीबडी. It is our responsibility not to influence the idea or will of people to vote anyone. अब हमें दूसरों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो हमारी मर्जी से किसी को वोट कास्ट करें. उनकी मर्जी है कि वो जिसको चाहे वोट कास्ट करें. It is our right to get the protection of our lives and property. हमें हमारी ज़िंदगी की जो है, हमारी हिफाजत का जो है, हमारा राइट है कि वो हमें प्रोवाइड किया जाए. It is our responsibility not to threaten someone's life and property. और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें दूसरों के जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए. From here we will move forward towards the activity time. For that you need colored papers. Take a colored sheet and write on one side rights of the citizen, and on the other side you will write responsibilities of the citizen, so you can easily understand that the right of one is the responsibility of the other. Note down the required information while watching the video. अब आपको पहले पॉज करनी है वीडियो, कलर्ड शीट के ऊपर 2 कॉलम्स बनाने हैं. Your columns will look like this: rights on one side and responsibilities on the others. और वीडियो देखते देखते साथ साथ आपके जहन में जो भी राइट्स आते हैं उसके ओपोजिट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाएं. So my dear students, let's quickly wrap up the lesson. Rights of one person is the responsibility of the other. We should be aware of our rights. हमें अपने हकूक का पता होना चाहिए. We should fulfill our responsibilities in order to serve our society and its people. और हमें अपनी moral duties का और responsibilities का पता होना चाहिए ताकि हम society जो है उसकी rights को fulfill कर सकें. So my dear students, you will be provided by a worksheet. Printed worksheet आप सबको दी जाएगी. So here, what are your rights and responsibilities? Can you think of all the rights you have? Can you think of the responsibilities you have to yourself and others? So here are 2 columns. You can easily write the rights that you enjoy and the responsibilities that you have. So pause the video and complete your worksheet. So my dear students, let's quickly look at the homework that you have. It is the home activity number 3. When you do not fulfill your responsibilities, how your siblings get affected. Discuss with your parents and note it down. अब घर में जब आपके siblings, आपके बहन भाइयों के rights जो हैं वो पूरे नहीं होते, वो affect होते हैं, तो वो कैसा behave करते हैं. You have to discuss it with your parents and also note down their behavior या उससे क्या effect होता है घर में, कैसे जो है आपके घर का peace जो है वो इस चीज़ से effect होता है. You have to write that. Now for assessment, on page number 20, you will do the statement number 3. The government has started metro bus for the convenience of people. Identify the responsibility of the people. अब आपका right है कि आपको public transport मिले, metro bus आपको मिल गई. Now what is your responsibility towards it? Transportation facility, paved roads for the metro bus, not to damage metro bus, low fare for traveling. So what is the most appropriate responsibility? Circle that. For that, now we will move forward towards page number 21, where the writing practice is given. You will do question number 7. What are the difference between rights and responsibilities? Divide the page into 2 columns. Whenever you are writing about differences, you have to divide the page into 2. On one side, you will write rights, and on the other, you will write the responsibilities, and you can easily write it down. So this will be your homework. So my dear students, in next lesson, we will study about the term diversity and its key characteristics. Next chapter में हम पढ़ेंगे कि how the people are diverse, in what ways they are diverse. हम key features के बारे में बात करेंगे. Until then, keep everybody around you safe. बहुत सारा अपना ख्याल रखें and take care. Allah Hafiz.